ओके, अब हमें ना ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। अब अल हजर है। अब आप लोग में से बताएं कि इनमें से कौन सा वर्ड आएगा, ये जो ऊपर सारे वर्ड्स है ना। जमील में देखिए, हजर पत्थर, कमर चांद, मिंदील रुमाल, बाब दरवाजा, वरक पेपर, लबन दूध। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने ये वर्ड्स जो है इससे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। जमील खूबसूरत, वसिख मैला, ऑपोजिट होता है ये नजीफ का, मफ्तू खुला, हार गरम, सकील भारी, खफीफ हल्का। अब आपने इसको देख कर जो है इन सेंटेंसेस में रखना है। तो आप लोग बताएं नंबर वन किसको समझ आया है, क्या होगा। नंबर वन का आंसर हैंड रेज करके बताएं तो मैं आप लोग को। ओके, अबू बकर मेहताब अल हजर का बताइए आप, इसमें क्या आएगा ऊपर में से। हारून। दोबारा। हारून। हार तो गर्म होता है, हजर तो पत्थर है। पत्थर गर्म है, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, गलत तो ये भी नहीं है, पत्थर गर्म हो सकता है, लेकिन और ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है ऊपर के वर्ड्स में से जो पत्थर के साथ फिट होगा। सकी, हम्म। सकीलुन। थकीलोन, वेरी नाइस, ठीक है, पत्थर भारी है। अल हजरु थकीलोन, और वो भी सही था, हारुन। अल हजरु हारुन, पत्थर गर्म है, मसला उसमें भी नहीं है, ठीक है। ओके, नंबर टू अल बाबू, ये कौन बताएगा, हैंड रेस करें। क्या आएगा ऊपर से देखें। जी अब्दुलरहमान। मफतूहन। वेरी नाइस, अल बाबू मफ्तूहुन यानी दरवाजा। अब्दुलरहमान खुला है। दरवाजा खोला हुआ है, जबरदस्त। खुला। अल ओके, अल कमरु, बाकी लोग भी ट्राई करें, शाबाश, अल कमरु। एनीबडी। मोहम्मद अबू बकर ट्राई करें। ओके, अहमद आप ट्राई करेंगे। मिस कौन सा? नंबर थ्री अल कमरु। अल कमरू। मिस मतलब बताया, मैं भूल गया था। चांद अल चांद। कमरू का मतलब चांद। चांद। मिस जमील। हाँ एग्जैक्टली, अल कमरु जमीलुन, माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट अल वरकु, ये किसको आता है, ये कौन करेगा। देखिए उनमें सब तो ऊपर तो दो तीन ही रह गए, उनमें से ही कोई आएगा। जी आरिफ ट्राई करिए, अल वरकु। आरिफ आर यू देयर। अल वरकु। इस नाम से। मैम, अल वरकू। सकील हो गया, मफ्तू हो गया, जमील हो गया, वसिख मैला बचा, हार गरम, और खफीफ हल्का। अल वरकू खफीफ। वेरी नाइस, अलवरकु हफीफुन, पेपर हल्का है। ओके, अलमिंदीलू, ये किसको समझ आ रहा है, ये क्या होगा। जी अब्दुलरहमान। वसीफुन। अलमिंदीलू वसीखुन, सही है, सही, बिल्कुल सही है, मैला है, रुमाल मैला है। मतलब। अच्छा। अच्छा, अल्लबनु, लास्ट वन। हम्म। अल्लबनु। जी अहमद, अल्लबनु। ओके, अबू बकर मेहताब अल्लबनु। मिस हारून। अल्लबनु हारुन, लबन गरम है, दूध गरम है। ओके। अच्छा, अब चलें, ये तो एक तरह से इसको हम दोबारा बाद में भी कर सकते हैं। जी अब्दुलरहमान कुछ कहना है, अच्छा। ओके, चले इनके मीनिंग्स जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाएं। अ, चले। ओके, ट्राई करें सबसे पहले कौन, मोहम्मद अबू बकर आप ट्राई करिए, फर्स्ट लाइन का मीनिंग करें। जी मोहम्मद अबू बकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अब्दुलरहमान आप करें। अल कमर चांद। जदीद नया कदीम पुराना। वसिफ मेला। एक और लाइन कर लें।
नजीफ का नहीं पता। नजीफ साफ सुथरा, क्लीन। नजीफ साफ सुथरा। हारून गरम। बारितुन ठंडा। सगीर छोटा। माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट टू लाइंस कौन करेगा? जी, अबू बकर मेहताब, आप ट्राई करिए। अबू बकर मेहताब, ट्राई करें। हम्म, क्या आप लोग अवेलेबल नहीं है आज? आप लोग बिजी हैं क्या? अगर कुछ ऐसा हुआ करे मुझे क्लास से पहले बता दिया करें, इट्स ओके। चलें फिर, बाकी तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब्दुलरहमान, आप ही कंटिन्यू कर लें। कबीर बड़ा। मफतूह खुला। खुला हुआ। मकसूर। मकसूर का पता है मुझे नहीं पता। टूटा हुआ। टूटा हुआ। टूटा हुआ। शकील ही नहीं पता। भारी। शकील भारी। खफीफ हल्का। हम्म, जमील खूबसूरत। वाकिफ वाकिफ नहीं खड़ा। पता। खड़ा। खड़ा। हम्म। जालिसुन बैठा हुआ। माशाल्लाह, परफेक्ट। चले, अब हम लोग उधर चलते हैं। वो जो वीडियो मुझे आप लोगों को दिखानी थी वो दिखाती हूँ थोड़ी सी। इवन इफ यू फॉरगेट, अगर किसी को नहीं पता हो ना आंसर्स, तब भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जितना पार्टिसिपेट करने की ट्राई करेंगे ना उतना लर्निंग ज्यादा होगी इंशाल्लाह। चैलेंज के तौर पे लिया करें ना। ओके ओके, आई विल ट्राई, आई नो सम वर्ड्स बट आई डू नॉट नो द रेस्ट, स्टिल आई विल ट्राई। ऐसे बहादुर बन के आया करें सामने। देखिए, अब्दुलरमान को भी नहीं पता था ना, बट स्टिल ही ट्राइड। कुछ वर्ड्स उनको नहीं पता थे, तो डू ट्राई। अच्छा। दिस इज द वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट। Yep. It's an animal matchup, a series of 15 battles to see who's the best and baddest. Find out who takes all on Animal Showdown. It's Earth's largest living land mammal, up against a super small insect. Looks like there's a clear champion, right? Don't count these mini but mighty insects out just yet. So who's the strongest? A heavyweight that packs a powerful punch, letting its size speak for itself. Weighing as much as 7 tons, standing as tall as 13 feet, and able to lift more than 500 pounds. The elephant. Or our lightweight, a tiny but tough contender who's strong in all sorts of weird ways, weighing less than 1,000th of an ounce and able to lift many times their own weight, the Weaver ant. First up is our heavyweight, the elephant, a gentle giant of the wild. With a strong trunk and legs, people have used these massive creatures for thousands of years to push, pull, pick up, and carry heavy things. There are 2 species of elephants, African and Asian. Both are huge. African elephants only slightly outweigh Asian ones. And it's not just size and weight that make an elephant so strong. Its structure plays a big part. To hold up all its body weight, elephants have extra thick bones that don't crack under pressure. Its beefy bones are strong enough to withstand all that weight, pushing the force downward into its heels, where big, fatty pads of tissue help balance the weight around their feet and absorb vibrations from their body movements. And its trunk is strong too, made up of 15,000 muscles and not a single bone. This appendage is powerful yet flexible, able to pick up a tree, and using its finger-like structures at the end of the trunk, pick up an item as small as a peanut. If we're judging just on the ability to lift, it seems like there's no contest, right? The African elephant is the winner, trunks down. What about heavy lifting with your mouth?
Time to meet our challenger, the lightweight. Weaver ants weigh less than 1,000th of an ounce. This tiny insect is super strong in all kinds of ways. There are about 12,000 species of ants living worldwide. Most famous for their snapping jaws and ability to lift several times their own weight. Weaver ants' mighty mouths are put to the test. The strong muscles in the ant's head and jaw-like mouthparts, called mandibles, can lift humongous loads. And like weightlifters, they control and balance their weight. They also have tiny, moist pads to help them grip on slippery surfaces. Even more impressive is that weaver ants hardly weigh anything. These lightweights are tiny and don't have bones, so their small size works to their advantage. Unlike elephants, ants use much less muscle power to support their own weight, leaving more power for lifting objects. The elephant may be one of the brawniest beasts in the animal kingdom and can lift hundreds of thousands times more than an ant. But an ant can hoist 2/100ths of an ounce of bug larvae, the equivalent of a vitamin pill. This may seem like nothing, but that's 100 times its own weight. Hands down, it's a knockout win for the weaver ant. The super small lightweight beats the super-sized heavyweight and advances to the next round. Find out who's the toughest on our next matchup between a water bear and a giant tube worm on Animal Showdown. It's an ultimate animal matchup, a series of 15 battles to see who's the best and baddest. Find out who takes all on Animal Showdown. These two contenders take tough to the next level. They're both able to stay alive in the craziest conditions, like freezing cold to boiling hot temperatures that would kill most animals. Who do you think is the toughest? An itty-bitty bear that's tiny but tough, less than 1 inch long. That's less than half the size of a poppy seed and lives in the most extreme conditions, the water bear. Or our challenger, a weird but rugged creature that can grow up to 6 feet tall and has an arsenal of alien-like abilities, the giant tube worm. Which of these deep-sea creatures do you think will survive the battle? Let's meet our first competitor, the water bear. A mini but mighty beast that isn't actually a bear at all. It only resembles one of the world's tiniest visible animals, an 8-legged invertebrate, which means it has no backbone or bony skeleton. This indestructible miniature bear can survive in the harshest of conditions, like the deepest parts of the ocean, severe drought, or even in outer space. That's right, water bears can survive without air, endure radiation blasts, and stay strong in the freezing temperatures of space. Surviving conditions that are out of this world is one thing, but this tiny Terminator can do something else really weird. Water bears can transform themselves into a glass-like cocoon and live in this state for more than 10 years, and then go right back to normal. How's that for tough? Now for our challenger. Also no stranger to the harshest, most extreme living conditions, growing up to 6 feet long. The giant tube worm may not look tough. It may not even look like a worm, but is a very rugged contender. This deep-sea creature has no eyes, no mouth, no digestive tract, and no bottom. Now that's a pretty tough act to follow. Giant tube worms don't have to eat. They get all their food from the bacteria living inside of them. So no food, no problem. Living 1 mile below the surface of the Pacific Ocean, these creatures are not afraid of the deep sea. It's so deep there that the atmospheric pressure of the ocean could crush most other animals. But this tube worm is totally tough. It's able to survive with no sunlight, freezing temperatures, surrounded by burning liquids, like a super hot black smoker chimney, belching out materials as hot as 750 degrees Fahrenheit. Now that you've seen our two challengers, who do you think wins out? The tiny but tough water bear, or the weird and rugged giant tube worm? It's a tough call.
Both can withstand the harshest of conditions and redefine what it means to be an animal. But there can only be one winner to advance to the next round. This victory goes to the teeny tiny water bear. After all, they can survive being starved, frozen, boiled, and even shot out into outer space. Now that's one tough animal. Find out who wins the title of prehistoric baddie on our next ultimate matchup between a Quetzalcoatlus and a super croc on Animal Showdown. It's an ultimate animal matchup, a series of 15 battles to see who's the showdown. Present-day predators that take supersize to another level. Versions of battle between. Let's travel back in time for a battle between two mega contenders, the biggest and baddest nightmare versions of present-day predators that take supersize to another level. Will they fight it out in the sky or in the water? Who do you think will take the title of prehistoric baddie? A giant flying reptile that could grow as tall as 16 feet, the Quetzalcoatlus. Or a jumbo-jawed monster reptile that was up to 40 feet long and is as heavy as a small whale, the super croc. First up is the Quetzalcoatlus, a giant flying pterosaur that lived 70 million years ago during the age of the dinosaur in what is now Texas. Weighing in at more than 400 pounds, the Quetzalcoatlus is thought to be the largest flying creature that ever lived. This feathered serpent was a frequent flyer champion, capable of soaring up to 10,000 miles in one flight. That's almost half the distance around the world. Similar to storks, these supersized scavengers stalk their prey from the sky, snatching fish from the water and mammals from the ground. Even though they had no teeth, these prehistoric predators used their 8-foot-long beaks as weapons. And when on land, they could fold up their wings and walk on all fours, terrorizing their prey. Now that we've seen the biggest and baddest prehistoric animal of the air, let's meet a colossal creature that dominated the water, the super croc. A formidable challenger that lived in Africa 110 million years ago during the Middle Cretaceous period, a time when most of the landmass we are familiar with was underwater, making the ancient rivers this mega croc's playground. Weighing in at a monstrous 8 tons, this massive creature was twice as long as today's crocodiles. Armed for battle with a super tough exterior covered in scutes, bony plates that protect its neck, back, and tail from predators, passed down over millions of years. Today's crocs, alligators, and turtles share the same protective shield. And this mega monster's greatest weapon of all was its jumbo jaws. Lined with more than 100 powerful teeth, its jaws were nearly 6 feet long. It's a prehistoric beast that was able to eat small dinosaurs as well as fish. Both were super in size, stealthy stalkers, and used their mega mouths as weapons. Who will it be? The Quetzalcoatlus or the super croc? Only one can advance to the next round. The win goes to the super croc. After all, it was humongous, had a tremendous bite force, and outweighed the Quetzalcoatlus by 17,000 pounds. awesome. कितने सारे एनिमल्स होते हैं ना हमें पता भी नहीं होते हैं सो वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर. ओके चले अब हम क्विज की तरफ चलते हैं. किसी ने कोई व्यू शेयर करना है अपना तो यू गाइस कैन. और भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हो ना तो बताया करें. सही है. अच्छा मैं शेयर करी हूँ. जी हमदान आपने हैंड रेस किया हुआ है. मिस मैंने भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स देखे जो कि डेंजरस होते हैं. हमदान अभी आपका नाम अहमद था ना. हाउ कैन यू चेंज. आई वार्नड यू बिफोर not to do this.
एक मिनट रखिएगा जी। अबूबकर मेहताब बेटा, Ma'am, you forgot to give us a break. जस्ट 1 मिनट अबूबकर। जी कैन यू रिपीट बेटा, क्या कह रहे हैं? You forgot to you forgot to give us a break today. ओके ओके, वाटर ब्रेक, ऑल राइट, श्योर। सो कम बैक एट 4:46, ठीक है, 2 मिनट्स के बाद आ जाएगा 4:46 पे। Welcome to the